Hello everybody. So today we will be discussing about what are the challenges related with the quality and supply of manure of seeds. In a previous video what I have discussed the issues, but in this video we will discuss about the challenges related with the quality and supply of manure. So we will discuss point by point. First, first point, that is difficulty in managing manure nutrients. So एज वी नो, मैन्योर होता क्या है? मैन्योर जो हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, काउ डंग और ये जो जो मतलब वेजिटेबल पील्स होते हैं, प्लांट का वेस्ट होता है, कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट होता है वीट का, तो दीज आर इन सब से जो बनता है वो होता है मैन्योर। उसको अपन लोग एक लैमिन लैंग्वेज है ना, बेसिक लैंग्वेज में अपन लोग उसको खाद के टर्म में जानते हैं, जो हमारे मतलब कि फार्म लैंड में सब में यूज होता है। So first challenge is that difficulty in managing the manure nutrients. तो अब मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स दो कौन से होते हैं? एज वी नो, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, दीज आर द वेरी इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन और फोस्फोरस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। बट व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स अप्लाइड इन एक्सेस, जितना जितना क्रॉप्स को चाहिए बट उससे ज़्यादा भी आप उस लैंड पे आप ये न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई कर रहे हो, so these nutrients will not able to absorb in a particular amount and all these nutrients will be end up with the water. ये सारे nutrients water के साथ end up हो जाएंगे और ये they won't able to absorb it properly if you apply it in excess amount. So make sure कि आप उसको जितना crops को जितना उस farmland को require है आप उतना ही nutrients उसमें apply करो. Now the second one is less use of potassium. So as we know कि fertilizers जो होते हैं अपने मध्य प्रदेश में, वो क्या क्या जनरली यूज करते हैं? नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम. बट द कंजप्शन ऑफ द पोटेशियम इज वेरी पुअर एज कम्पेयर टू द फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन. पोटेशियम का जो कंजप्शन है वो बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं फोस्फोरस और नाइट्रोजन के रेशियो में. ठीक है, तो क्यों अब पोटेशियम का कम क्यों है? बिकॉज मे बी फार्मर्स आर वेरी दे हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस, और पोटेशियम की जगह वो लोग क्या यूज करते हैं? यूरिया फर्टिलाइजर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस इनकी हाई ईल्ड और हाई प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है. इन सम केसेस इन सम पर्टिकुलर क्रॉप्स लाइक सोयाबीन, पेडी एंड ग्राउंडनट, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी रिक्वायर जिंक, सल्फर, rock, phosphate. So these are some nutrients that we require for a particular crop. What? Zinc, sulfur and phosphate to grow the productivity of the soybean, paddy and groundnut. Now the third challenge we are facing here in Madhya Pradesh is regarding the manure is nitrogen and phosphorus ratio. As I have just talked about, as I have just told you in my first point, that nitrogen and phosphorus, these are very important for the plant growth, right? But the manure contains more phosphorus as compared to the nitrogen. मैन्योर के पास ज़्यादा फोस्फोरस है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और ज़्यादा फोस्फोरस भी एक्सेस में होना, देखो नाइट्रोजन और फोस्फोरस इन दोनों का रेशियो ना बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अगर फोस्फोरस ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा ना कि क्या सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉइल को भी, क्रॉप्स को भी उतना ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जितना जितना वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जितना वो रिक्वायर है, उनको रिक्वायर जितना उनको नीडेड है. बट यदि हम एक्सेस में करेंगे तो दे ऑल विल बी एंड अप विद द वाटर एंड नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट, तो ये उनको हार्म ही रहेगा, उसकी उससे प्रोडक्टिविटी या उसकी यील्ड नहीं बढ़ेगी. नाउ फोर्थ वन इज challenges we are facing is variable nutrient content. हमको पता है मैन्योर एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में तो नहीं है. दे आर manure, it can be among the animal species, within the species, organic waste material, मतलब कि इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है, ये अलग अलग मिलके बनता है. दे हैव अ वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स. हमें कभी एनिमल स्पीशीज से मिल जाए, कभी प्लांट स्पीशीज से मिल जाए, कभी हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे मिल जाए. So this is what these have a variable nutrient content. Now fifth point is nitrogen availability. Okay, so nitrogen availability, as we know कि manure जो होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है. अब ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होने के कारण दे due to manure is due to available in organic form, manure not like the soil not able to absorb it properly. ऑर्गेनिक फॉर्म में होने के कारण मतलब कि सॉइल उसको प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स, some microbes are present in a leguminous plant, and these leguminous plant helps to convert this nitrogen into a soluble nitrates.
ओके, सो इन माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, दे विल हेल्प टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट, सॉल्युबल नाइट्रेट, that will help the soil to absorb their fertility, like to absorb these nutrients. So nitrogen availability हम ऐसे करवाते हैं हमारी soil को, क्योंकि directly तो वो absorb करते नहीं है, तो through leguminous plant they could able to absorb it. Also the rate of the mineralization also, अब आप बोलोगे कि soil है, crop है, उसका mineralization किस पर depend करता है, तो that depends on the soil, climate, temperature, microbes कैसे present है, whether they are able to convert the nitrogen to the soluble nitrate or not, which is absorbed by the plant. So these points, actually all these we couldn't predict exactly. हम उन सबको exactly predict नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हमारे यहाँ पे क्या होगा ना कि weather condition poor है, कभी temperature ज़्यादा high है, कभी ज़्यादा है, कभी high है, not up to the crops which is required. So these are the challenges. Then sixth one is farm site risk. फार्म साइट रिस्क, एज वी नो, हमारा जो मैन्योर होना है, मैन्योर जो होता है वो बेसिकली हमारे फार्म साइट पर ही होता है, ठीक है, तो हम उसको वहीं पर ही स्टोरेज करते हैं, क्योंकि हमको वहीं फार्म पर ही रिक्वायरमेंट होती है उस मैन्योर की. बट इसका रिस्क ये है, इट कुड बी डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज ऑल्सो, इट कुड बी स्पिल्स इन अ रोडवेज ऑल्सो. तो इसके कारण क्या होगा ना कि मतलब पोल्यूशन फैलेगा, गंदगी आएगी, तो दिस शुड नॉट बी कम. जैसे कि क्या होता है ना कि there must be a setback. Setback, this is a very important term. I will explain you. Setback क्या होता है ना, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ना एक रूल लेकर आई है setback के लिए, that there must be a minimum distance between the manure storage and the water bodies or the sinkholes or other environmental sensitive area. मतलब कि हमारा जो स्टोरेज है मैन्योर का और जो वाटर बॉडीज हैं और जो कुछ अदर इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया जिनको हार्म कर सकता है, तो देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सेटबैक. सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैव सेट द रूल्स रिगार्डिंग दिस थिंग, एंड जितना ज़्यादा मैन्योर क्लोज रहेगा इन वाटर बॉडीज के उसमें, उतना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल रहेगा, वाटर उतना ज़्यादा वो कंटेमिनेट करेगा, एंड इट इवन कॉज द फेलियर ऑफ द पंप्स, हाउसेस, पाइप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स. यदि मैन्योर की अगर हम मैन्योर स्पिल्स के यदि हम कॉजेस पढ़ेंगे, तो दीज आर दी कॉजेस, लाइक उससे पाइप्स का फेलियर हो जाएगा, कुछ इक्विपमेंट्स उन सब का फेलियर हो जाएगा. Now, seventh challenge is what transportation risk for manure spills. So transportation risk. अब ट्रांसपोर्टेशन रिस्क क्या, अगर जो मैन्योर है अब वो फील्ड से लेके हमारे पब्लिक रोडवेज में आ जाता है, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल, और अगर वो पब्लिक रोड्स में आ जाता है, डिचेस में आ जाता है, तो दैट वुड बी द हार्मफुल फॉर पब्लिक, फॉर कम्युनिटी ओनली, राइट. सो वी शुड बी टेक केयर अबाउट दिस थिंग. देन now the eighth challenge is what land application manual loss risk. अब इसमें land application manual loss risk related क्या, over application. Over application मतलब कि आप समझो उसको, word से समझो. Over application, that means you are applying a lot of manure in a small piece of land. आप छोटे piece of land पे बहुत सारा manure apply कर रहे हो, या तो ये, या फिर आप normally आप बहुत ज़्यादा manure apply कर रहे हो which could not be able to absorb by the soil or absorbed by the crops. So this is one of the factor under this. And the second one is not observing setback. Setback, as I have told you just now, I have explained you in our previous point. Setback, like there should be a minimum distance between the manure storage and the water bodies and other essential other sensitive environmental area. तो अगर हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे उनके डिस्टेंस को, तो इट विल हार्मफुल. Okay, now the ninth one is a biochemical oxygen demand. As we know कि biochemical oxygen demand भी जो animals जो water bodies में रहते हैं, they really need it. But यदि उन water bodies के अंदर हमारे plant का decay हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, and जो fishes वगैरह और other जो aquatic animals है, they would kill, like they would be die, right? They would able to survive it if they will not get the oxygen. आपको क्या लगता है, जो human being है सिर्फ उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? No. Plants even require the oxygen, animals even are required the oxygen. So this is very essential. So we need to take care of this thing. And और हम ज़्यादा amount of manure जो है अगर वो water bodies में जाता है, तो it will deplete the oxygen and again it will harmful the organism which is living under the water bodies. Then the 10th one is lack of education. Lack of education is like
Many of the farmers are not aware regarding how they must use the fertilizers, or what kind of fertilizer they should need it, how much they should apply the manure, like over apply nahi karna chahiye unko. So they are very lack aware about this thing. And how to use the biomass. Biomass is help for making compost and all. So so government, what they bring, green manuring practices to maintain this fertility in a soil. So एमपी की गवर्नमेंट ने और क्या किया है कि दे ब्रॉट ग्रीन मैन्यूरिंग प्रैक्टिसेस सो दैट farmers would be much aware about it, because they need to be, until unless they won't able to get it, how they should use these fertilizers, or how they should use of the biomass, or how much the manure they should apply in a field, or how they should store, how they should maintain a proper setback, like how they should recognize the setback. So until unless if they not recognize these essential things, they won't able to they won't able to produce, they will not able to increase the productivity of their farmland. So these are the essential point that I have discussed with you about the challenges. If you have any doubt regarding any of the points, so please type in a chat box. I will definitely reply it. And if you like this video, so please don't forget to share and subscribe it. And one more thing, I will mention all these points um, in my description, so you could even check it from there. Thank you.